Hello, what's up guys? Welcome back to another episode of Assassin's Creed Valhalla and currently guys हम लोग विंचेस्टर नाम की लोकेशन पे एंड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था 3 सीक्रेट मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर को ढूंढना। तो उसमें से 2 लोगों को हमने ऑलरेडी गेम से हटा दिया है एंड यहाँ से आगे गेम कंटिन्यू करने के लिए हम लोग गुडविन से बात करने वाले हैं एंड देखते हैं कि आगे का गेम प्लान क्या होने वाला है। तो ये रहा भाई गुडविन बैठा हुआ है, पता करते हैं इससे बात करके। Is this where Justice hides when she's tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill on her way to eternal damnation. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester. My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. I've been called worse. Be thou hail, Ealdor Bana. That's Life Destroyer in our dialect. I sat easy with my kinsbane, old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door, expecting my death, yet unafraid. You're quite safe with me, Dane. For now. If the mead is fresh and the air is cool, you may often find a friend even amongst your enemies. What does a reeve do exactly, besides sniff around the king's coattails for the scent of praise? I enforce and interpret the laws here. Not man's, but God's law. The natural laws that move the world and hold it together. Well, if that keeps you busy. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. सही है। तो बेसिकली यार हम लोग जिस बंदे को हेल्प कर रहे हैं वो भी हमारा एनिमी ही है, बट जो 3 सीक्रेट मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर को हम लोग ढूंढ रहे थे वो दोनों के एनिमीज है। तो इवन इफ वी आर हेल्पिंग अपने एनिमी को, बट इन द एंड हम लोग को भी फायदा होने वाला है इस चीज से। Where is your king now? Alfred is busy with the Ealdorman of Wessex. A Witten was lately called to discuss the little matter of a bishop's timely death. Are you sure the Sikhs is dead? The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you see. I do not believe it. Too much theatre in Winchester. Overwrought prayers and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. Whether you find or make a corpse, meet me at the Witten with your report. ओके गाइज, तो अकॉर्डिंग टू गुडविन जो 3rd मेंबर है जिसे हम लोग ढूंढने वाले थे वो ऑलरेडी हटा हुआ है यार, उसको ऑलरेडी किसी ने मार दिया है। बट ईवोर को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोगों को खुद से जाके चेक करना है कि जो 3rd मेंबर ऑफ द ऑर्डर है वो अभी भी प्रेजेंट है या नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली गाइज विंचेस्टर में अपना यही ऑब्जेक्टिव था कि 3 सीक्रेट ऑर्डर मेंबर्स को रिमूव करना है। तो 2 को तो हमने खुद ने रिमूव किया है, बट 3rd वाला बस गुडविन की बातों पे हम लोग बिलीव करते आ रहे हैं। तो अभी खुद से भी चेक कर लिया जाए कि भाई 3rd वाला मेंबर सही में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। If the bishop is wormmeal, then here should be the proof. ओके, अभी लोगों से पूछताछ करके हम लोगों को एनालाइज करना है इनकी बातों को। बहुत सही, लेट्स ट्राई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Did you know Bishop Aelfred? No, but I plan to write an epic poem of his grisly demise. Oh, poor Aelfrith, scorched of face. All your woeful companions, bold, Bionid, weeping. Weeping as you are... Sleeping. ओके, ये बंदे तो नहीं जानते बिशप को, ठीक है? और किसी को बात Such a करते हैं। grisly fate. Did you know Aelfred? By reputation, I did. He was no friend of Alfred's. I once heard them quarreling at a Witten. ओह, ये मैडम ने भी बस एल्फर्थ की बातें सुनी है, बट इसने कभी देखा नहीं उसे। कुछ तो भाई प्रॉब्लम होने वाला है मतलब। I'm sorry for your loss. Makes no odds to me. But I'm sorry for Harriet. She cared so much for him. More than a sister should.
बिकॉज एज ऑलवेज गाइज जब भी हमें लगता है किसी भी एरिया की अलायंस हम लोग जीतने वाले तभी कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ जाता है. तो प्रोबेबली विंचेस्टर का ट्विस्ट यही होने वाला है कि थर्ड वाला मेंबर शायद जिंदा है. Interesting. A stranger comes to Wember. You do not mourn like they do. Wember is always here, helping the sleeping, singing to them, so they are not frightened before they meet God. The sleeping? You mean the dead? Wember helps the monks. Dig, dig, dig. You dig the graves. Did you bury Aelfirth? Have you seen Leof? My poor friend. Poor Leof. Leof. What happened to him? Sleeping. Sleeping like my dog when I hugged him too hard. Someone heard Leof. Yes. And while he slept, they stole his face. भाई दाग में कुछ तो काला यार दाल में. अगर बिकॉज ये जो बंदा है ये सही तरीके से हमें खुल के बताया नहीं, बट इसने हिंट दे दी है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. और किसी से बात करके देखते हैं. बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज द सीक्स रियली डेड. Did you know Bishop Aelfirth? तो ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है. But can you still smell the burned flesh? It's rife across the whole graveyard. ओके और किससे बात करें. Do you not see? I am in prayer. May we speak of your brother's death? Have you no shame? Leave me. I will leave you in peace then. Only his head and neck are burned. Is this what Wember meant? That they stole his friend's face? And this corpse's build is slight, frail. Goodwin said Aelfirth was a brute. ओह गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा दाल में कुछ काला पक्का है. बिकॉज इस टेबल पे जिस इंसान को रखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करता है गुडविल के डिस्क्रिप्शन के साथ. बट रादर इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है अभी जिस बंदे से हम लोग मिले वेम्बा से जो कि यहाँ पे खड़ा है उसकी बातें ज़्यादा सच लग रही है. तो कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे डेफिनेटली. पता लगाते हैं. प्रोबेबली थर्ड वाला जो मेंबर है गाइस वो पक्का जिंदा होने वाला है. A sad day for Winchester. Maybe now God will reward us with a man who truly believes in him. ये बंदा कोने में क्या कर रहा है, इससे बात करते हैं. Are you the bishop's family? God, no. Just here to make sure that impious bastard is actually dead. He bedded my wife, the randy bastard. Any more clues? कहाँ है? इससे तो बात करके फायदा नहीं है. Are we friends now? यहाँ पे कुछ है. Threadbare clothes. Did they belong to Wemberstrand? This funeral is a shadow play. The order killed an innocent, burned his face so no one could tell, and interred him. खतरनाक twist once again, guys. His sister knows more than she lets on. तो ये बेसिकली एओल्फोर्थ है ही नहीं. ये फ्यूनरल किसी और का है, किसी और बंदे को यहाँ पे लाके रखा गया है. मतलब ऑर्डर का जो थर्ड मेंबर है गाइस वो अभी भी जिंदा है इस गेम में, तो उसे हटाना ही पड़ेगा हमें. What now? A pretty show you have laid on here, but I know the truth. You would dare speak to me? When my poor brother Aelfirth lies cold in his shroud. Your brother is the Sikhs, and no more dead than I am. Heresy. My brother was the Bishop of Winchester. How better to hide than behind a bishop's robes? He's no man of God. He serves the order. And you buried him when Goodwin got too close to the truth. Or rather, you buried another in his place. The poor gravedigger's friend. No, you cannot just... Your brother is not in that crypt. Tell me where he is before more lives are lost. I will not tell you anymore. Guards! ओ यार इसने तो गार्ड्स बुला लिए. मतलब इस लेडी को सच्चाई पता थी, बस ये एक्टिंग कर रही थी यहाँ पे. अरे यार अब ये गार्ड्स को हटाना पड़ेगा. चलो भाई आ जाओ सब लोग, मार खाओ यहाँ पे लाइन से. अरे चोमू ये ले भाई. अपना एक्स कॉम्बो सच में ब्रूटल है, जबरदस्त है.
not leave me alone. Enough of this cat and mouse. Where's your brother, the one they call the Sikhs? He is a ghost now. But he will make himself flesh once more of the Witten. And Alfred will be king no more. He means to kill Alfred. Regicide? No. The king will step aside and Aelfrith will lead us all. Risen and resplendent as the Lord. You are a damned fool. ओके तो द सीक्स का मेंबर भी रिवील हो चुका है. इसका रियल नाम इज एल्फर्थ एंड इसे अभी ढूंढना है. तो गुडविन की भी जो रिपोर्ट्स थी गाइज वो गलत थी. अकॉर्डिंग टू हिम थर्ड वाला मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमें बस 2 को निपटाना था. तो 2 को तो हम लोगों ने ऑलरेडी हटा दिया था लास्ट वाले एपिसोड में, बट थर्ड वाले को अभी खुद से ढूंढना है वंस अगेन. बट एटलीस्ट वी हैव द प्रूफ नाउ गाइज कि वो जिंदा है. इस वाले मिशन का यही ऑब्जेक्टिव है हमारा कि तीनों को हटाना है. यही कहीं होने वाला है. अपने रेवन का हेल्प लिया जाए इस तरफ. लेट्स गो. इसके अंदर ही है डेफिनेटली. एंड डोर लॉक्ड है, मतलब की चाहिए. की इस डोर के अंदर है. ये भी बंद है. वाओ. तो और एक एंट्रेंस ढूंढना पड़ेगा. ये रहा. सीधा एंट्रेंस मिल गया यहाँ पे. The Sikhs must be hiding in the crowd, biding his time to strike at Alfred. Not priest, clerk or abbot can turn the letter of their sermons from Latin to English. तो आई थिंक गाइज 1 2 3 4 ये चारों में से एक है सीक्स और उसी को हम लोगों को निपटाना है भाई. And we mourn him. But the foul तो deeds किस of पे the ट्राई करें? righteous are sown among our holy deeds. फर्स्ट इसी को लेते हैं. चलो. Prickles and tear in a field of wheat. Educate. अरे यार आ जाओ यार. यहाँ पे इनोसेंट लोग भी बहुत है. उनको हार्म नहीं करना है. Enough, you scheming cur! Greater men than you died on my sword. आ जाओ भाई, थोड़ा पीछे आओ. हो गया. अब मार खा भाई. इतना डिफेंड क्यों करके खेल रहा है यार? दम है तो सामने आ. ज्यादा लाइफ नहीं बच गया अब इसका. खाली ड्रामा कर रहा है. खत्म. लेट्स गो. How sweet is the shepherd's pipe when he calls his lambs to slaughter. I was born to Christians in the northern wilds. My mother would cradle me beneath the stars and whisper, dove-like, God watches over you. Then your people came. And God fixed his stout eye as they slit her throat for a copper ring. No stars threw down their spears as barbarians smeared her blood through fields of broken wheat. God watched all, and I hated him. हर एक ऑर्डर मेंबर को एलिमिनेट करने के बाद खतरनाक एनिमेशंस दिखाते हैं. God was testing you. A trial you failed. Alfred's God is weak. Yet he would chain us all in his service, from our first breath to our death rattle. My order wishes to break these mind-forged manacles. I am the wolf in lamb's wool.
he takes on the role of a god himself. A worthy path to walk. A wolf is but a walking feast for ravens. One more gift for you, Dane. A deadly truth, if you can find it. With my death, the Order will not die. It will only transform into something far worse for all of us. Aelfirth will not cheat Loki's dread daughter twice. I owe you my life. An irony not lost on me, Alfred. My king, we'll go by back streets to the Old Minster. Eivor may find us there when all has settled. Aelfirth, my love! No! Curse you, Dane! My brother served God. He wrapped himself in a death cloak to murder your king. Shouldn't you rejoice at the death of a king? You are a heathen and a devil. We both have more questions than answers. But if you know this key, perhaps we can help one another. Where is its home? You treated me with kindness, but this damned Order, their machinations killed my brother, so the rest may rot. Take this key to the ruins beneath the bishop's house. You may find answers there. सही है, लेकिन येलफर्थ ने जाते जाते एक की हमें दी है एंड उस की में कुछ तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है. तो लेट्स यूज दिस की. आई थिंक इसी के नीचे होने वाला है क्या? नहीं, दैट साइड. तो बेसिकली किंग ऑल्फ्रेड ने बताए हुए तीनों टारगेट्स को हम लोगों ने हटा दिया है. बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए गाइस कि किंग ऑल्फ्रेड भी हमारा एनिमी है. बट जस्ट बिकॉज हम दोनों के एनिमीज ये तीनों ऑर्डर मेंबर्स थे, इसलिए हम लोगों ने हेल्प कर दी है. बट ऑल्फ्रेड का कोई भरोसा किया नहीं जा सकता. किसी भी मोमेंट पे वो खुद हम पर पलट सकता है. यहाँ जाना है एंड सामने गार्ड्स है, तो ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रेट रास्ता नहीं लेंगे, साइड से होते हुए जाएंगे. ये रहा वो सीक्रेट एरिया. If Aelfirth's sister spoke true, I will find answers in the ruins. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. This must be it. The door to Aelfirth's secrets. I will send this to Hytham. He may make some sense of it. यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है गाइस, कुछ क्लूज कलेक्ट करना है. इस रूम में तो कुछ नहीं, आगे बढ़ता है. Locked from the other side. Oh, okay.
यहाँ पे ब्लॉक्ड है, इसको अपने फायर एरो से भी उड़ा सकते थे बट अपना पावर अप कंप्लीट नहीं है, तो ये यूज करना पड़ेगा रेड बैरल। ठीक है, लेट्स गो। 1 2 3 बूम। यस। अरे यार अपने को लग गया आग, भागो। हाँ डन। ये वन मोर क्लू। Everything they did was to undermine Alfred. She lied to me. There's nothing here of the Order. I should see Alfred for my reward. ओह, यहाँ पे कुछ मतलब खास इंफॉर्मेशन था नहीं, तो यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं ऑल्फ्रेड के पास एंड अपना रिवॉर्ड लेके यहाँ से निकलते हैं। बिकॉज यहाँ का ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया है एंड ऑल्फ्रेड ने हमें प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये 3 ऑर्डर मेंबर्स को हम लोग हटा देंगे तो हम लोग को रिवॉर्ड देगा बहुत सारा कॉइन एंड यहाँ का लैंड शायद हम लोगों को फिर मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम यहाँ से निकलते हैं। वैसे गाइज अगर हम लोग खुद से पता नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कभी भी कि थर्ड मेंबर अभी भी जिंदा है, बिकॉज गुडविन के अकॉर्डिंग थर्ड मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बस हम लोगों को 2 लोगों को ठिकाने लगाना था, बट जस्ट बिकॉज हम लोगों ने अपना दिमाग चलाया तो यार थर्ड वाले के बारे में भी पता चल गया। यार ये है कहाँ पे किंग ऑल्फ्रेड? यहीं पे इसके अंदर है। ठीक है, Come forth, Eivor. Here is far enough. When wrongdoers came to devour my flesh, these enemies stumbled and fell. Have the laws of hospitality been thrown out, Alfred? I did exactly as we agreed. That you did. But do not mistake necessity for friendship. You are a man of your word, a man of God. Indeed. By his example, I live my life. Goodwin? Here is the only silver fit for one of your dragon boats. A reminder of Christ's sacrifice and our charity. This too I offer you. Live here among us in peace as a Christian, or die a pagan in a blood-soaked field. All you have to lose is life everlasting. And if I choose neither? He offers you hope, Eivor. A life of purpose, above and beyond this one. You'd be a fool to refuse. Your reign will end, King of the West Saxons. Raven wings will beat until your throne crumbles to dust. You were wrong, Goodwin. This one. भाई जाते जाते भी किंग ऑल्फ्रेड को चैलेंज कर रहा है ईवॉर, बिकॉज किंग ऑल्फ्रेड अल्टीमेटली हमारा एनिमी ही है। भले ही हम लोगों ने उसे हेल्प किया हुआ है ऑर्डर ऑफ द मेंबर्स को हटाने के लिए, बट ही इज आवर एनिमी। You had your chance, damn you! I did not want it.
The city is under alert. They will attack on sight. Oh भाई escape. भाई निकलना है. मतलब ऑल्फ्रेड ने एक टाइप से हम लोगों को धोखा दे ही दिया है. उसे हम लोगों ने इतना हेल्प किया यार ऑर्डर मेंबर्स को हटाने के लिए, एंड भाई ने अपने ऊपर ही अलर्ट चला दिया जैसे ही काम उसका हो गया. तो इसीलिए किसी के भी ऊपर भरोसा कर नहीं सकते यार. निकलो फटाफट अब यहाँ से. बिना पीछे देखे सीधा भागना है बस, और कुछ नहीं करना है. सारे गार्ड्स अलार्म्ड हो चुके हैं भाई. इट डज नॉट मैटर, हम लोग तो सीधा भागने वाले, और कुछ नहीं. निकल तो गई है, बस अपने घोड़े को बुलाते हैं, पार हो जाते हैं यहाँ से सीधा. कोई कुछ नहीं कर पाएगा. I will return to Hytham and Ranvi. They will want to know what happened here. नाइस. तो यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं. अब वापस अपने सेटलमेंट रेवेंसथॉर्प में जाते हैं एंड रैंडवी को रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे. आई थिंक इसके बाद ये वाली अलायंस भी हमें मिल चुकी होगी एंड अलायंस मैप पे इस पर एक टिक आ जाएगी. देखते हैं. तो लेट्स फास्ट ट्रेवल. बाय द वे गाइज मैं ये याद दिला दूं कि विंचेस्टर से एक्चुअली हमें एक सीक्रेट लेटर आया था, इसीलिए हम लोग वहाँ गए थे एंड वहाँ जाके हमें पता चला कि वो किंग ऑल्फ्रेड था जिसने हमें लेटर भेजा था. अगर पहले से ही पता होता किंग ऑल्फ्रेड था तो हम लोग जाते ही नहीं यार उस एरिया में. बट ठीक है, वहाँ जाके हम लोगों ने कुछ ऑर्डर मेंबर्स को एलिमिनेट तो कर ही दिया. इसके बारे में हेदम को भी बता देते हैं. यही कहीं होगा बंदा. I cleared Winchester of the Order. Yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange. He, or she, is toying with you, it seems. I have to go. Then go in peace. अब देखते हैं कोई और टेरिटरी बच गई है क्या मैप पे. बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टेरिटरीज हम लोगों ने कैप्चर कर ही लिए है इस गेम में. The Order in Winchester has been wiped out, but we are no longer welcome there. My contact was none other than King Alfred himself. The Order wanted him dead, so he fought back. Alfred? The line between friend and enemy is a porous one. सही, चलो मतलब यहाँ भी अपनी गोटी आ गई है. यहाँ पे भी टिक मार्क आ जाएगा अब. ओ भाई, मतलब फाइनली अभी हम लोग सिगर्ड के साथ बात कर सकते हैं. लेट्स ट्राई. Eivor, the time has come. Our time. Our time for what? My final glory awaits. Your final glory? I fear to ask what that means. Do I not speak plainly? My time in Midgard is done. I wish now to see the hall of my ancestors. If you wish to die, it will not be by my hand. I do not speak of death, Eivor. I speak of life. Life and glory everlasting. I know I've been in a fog these last few weeks. I know I speak words you don't fully understand. But I only ask you trust me once more. On my final voyage back to Norway, to wish my father farewell and achieve my destiny. Back to Norway? I need to discuss this with Ranvi. If you must. I will await your answer down by the docks. Do not keep me waiting. तो गाइज
फाइनली सिगर्ड वाला मिशन आ गया है। तो बेसिकली हम लोग ये पूरे मैप को जब पैसिफाई कर चुके हैं, सब जगह टिक हो चुकी है, हर एक टेरिटरी को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है, उसके बाद जाके सिगर्ड ने हमसे बात कर ली है। एंड यहाँ से जो नेक्स्ट मिशन होने वाला है वो होने वाला है सिगर्ड का मिशन। तो सिगर्ड खुद को गॉड समझ रहा है एंड वो अभी हमें कहीं पे तो ले जाना चाहता है, बट वी डोंट नो वेयर। तो इसके बारे में पहले रैंडवी से बात करनी चाहिए। I want to see the Alliance map. ओके तो हर जगह टिक मार्क हो चुका है, खतरनाक सारे टेरिटरीज हम लोगों ने कैप्चर कर ली है। बट ये नीचे की तरफ एक और नया चीज आ चुका है, विच इज होडा फिल्के। कोई अजीब सा नाम है। सजेस्टेड पावर इज 280 भाई साहब। It may be time to return to Norway. Sigurd is eager to see his father and beyond that, I do not know. I have heard ill news about Styrbjorn in the past year. If you go with care. We will leave now and return as soon as we're able. Good. And be safe. Both of you. Let's go guys. तो meet Sigurd at the docks. तो सिगर्ड हमारा वेट कर रहा है एंड आई थिंक अभी हम लोग को निकलना है हॉडाफिल के नाम की जगह के लिए। एंड प्रोबेबली गाइज वो वही जगह है जहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट गेम को स्टार्ट किया था। तो सिगर्ड वापस उस एरिया में जाना चाहता है बिफोर गोइंग आउट टू सीक हिज डेस्टिनी। तो उसकी डेस्टिनी क्या है भाई हमें तो नहीं पता है, बट सिगर्ड को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो गॉड है एंड उसे सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है एंड क्या करना चाहिए। बट बिफोर टेकिंग अस देयर एक बार हॉडाफिल का जाना बनता है अकॉर्डिंग टू सिगर्ड। सो लेट्स गो। Sigurd. Shall we then, Eivor? To Norway, and well beyond. To Norway, then. Good, good. Lead on. Sail out! So strange. Little has changed, but it feels unfamiliar. A few years abroad have shaped us more than all the decades we spent here, brother. And it's bloody cold. Colder than I remember. तो एग्जैक्टली गाइज हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ से गेम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एंड वो वाला एरिया हम लोगों ने छोड़ दिया था। बट न्यू वाले एरिया में हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या आई थिंक जितने अवेलेबल टेरिटरीज थी सारी कैप्चर कर ली है। Pains me to say it, to think it even. And our father, his fool, the poor man. It is a role he chose. He bent easily and broke in half. Do not pity him. No. For many moons I could not sleep, always thinking of his betrayal. The horrors I wished upon him. He deserves nothing but shame now. Put it out of your mind, Sigurd. There's no need to hound the old man. No. He must taste the same foulness that I taste. He must know what glory he missed by staying here, the lapdog of a conqueror. You want to speak with him? Yes. Face to face. I will tell him the truth. So the objective is guys find and speak to Styrbjorn and Styrbjorn Sigurd का father है। तो Sigurd basically अपने father को confront करना चाहता है and उसके बाद वो हमें कहीं पे तो ले जाना चाहता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, बस सिगर्ड को पता है बिकॉज उसको कुछ विजन्स आती है अपनी डेस्टिनी के बारे में। एंड अब पता चल जाएगा भाई कि वो सही में गॉड है या बस उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया गया। It thrives, in spite of our father, no doubt. Are you sure of this? I will say what needs to be said. Do you fear his rebuke? Oh no, I crave it. It may be the old hound has lost his bark. Or it may be you will light a fire beneath him. Inspire him with tales of our glory. If I do, I'll stoke that flame until it burns. There we go guys. जब गेम स्टार्ट हुआ था गाइज तो यहीं से हम लोग निकले थे एंड भाई कितना चेंज हो गया यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। फाइंड एंड स्पीक टू स्टीयरबियॉर्न। अब स्टीयरबियॉर्न कहाँ है इसको ढूंढते हैं। यहाँ चलो लेट्स गो। What was it Randvi said? Our father spends his days in the mead halls and his nights on barren planks of wood. That's right. We'll search the mead halls. I remember one nearby. A sad hole where men soak their own.
ये राष्ट्रीय ब्योन, यहाँ का किंग हुआ करता था ये। We should go. Look at him. Father. Sigurd? My son, Eivor, by Odin's blessing, come and let me look at you both. Stop. That is far enough. Blood of Tyr, what happened there? A grievous wound you have. Are you well? Far better than I look, I assure you. This calls for a toast. Your journey must have been long and cold. A drink to warm your blood. We are not here to drink or make merry. Only to look upon the wreckage of a once great man. And then what? Make new war against King Harald? Stake a claim on his crown? Is that your wish? To sow more chaos here? You're absurd, old man. What could possibly interest me in this frozen backwater? I heard rumors that England was infested with kings already. I thought maybe you would return here to... I've cast aside all dreams of kingship, father. A much greater end lies in wait for me. I have returned for one reason only. To say goodbye. And to thank you for your colossal failure. Failure? As a father, as a king, as a man. For without it, I would not have discovered my true self. My failure, as you call it. My oath to King Harald was the only sensible path forward for a man in my situation. What have you done with yourself since? Drink heavily and weep for what might have been? I have worked hard to broker peace across our land. To spread Harald's message of unity. I heard you sleep beneath Harald's bed. Always at his beck and call. And that he uses your gaping mouth as a chamber pot. You make light of my service to a great and powerful man. Is that how you treat those who serve you, Sigurd? You pathetic worm! Sigurd, this is not why we came. Plans change. As do hearts. Not this one. And you, Eivor? You did not trust us. इसी के साथ जाते हैं यार, बिकॉज ये हमें छोड़ भी नहीं रहा था यहाँ से जाने के लिए स्टार्ट ऑफ द गेम पे. बट हम लोग यहाँ से निकल के भाई कितना सारा प्रॉस्पर कर लिए एंड पूरे मैप में इतने सारे अलायंसेस कैप्चर कर लिए. You should have told us of your plan to bend the knee to Harald. And spared me the shame of seeing my father debase himself like a gutted pig. You are right. I owed you the truth, and for that I am sorry. But I will not apologize for what I did. Then I have nothing left to say to you. वैसे बात तो सही यार, किंग्स टियरबियॉर्न ने सही में हम लोगों को पूरी बात बताई नहीं थी. स्टार्टिंग ऑफ द गेम में भाई ने सरेंडर कर दिया था एंड बिना हमें बताए ये वाला डिसीजन ले लिया था. पर ठीक है, एनीवे सिगर्ड को यहाँ पे बस गुड बाय बोलने आना था किंग्स टियरबियॉर्न को एंड वो चीज हो चुकी है. तो यहाँ से आई थिंक वी कैन गो आगे. What turmoil did he see that took his arm and darkened his mood? He saw his father for what he truly was. A coward who faced his enemies with more honesty than he did his family. I was a father to you, Eivor. I have no father. This sad business is finished. Good riddance. And now we sail for further shores. To my true purpose. To my destiny. ओके, To the end of my road. तो सिगर्ड कह रहा है जो भी यहाँ तक था सब कुछ खत्म हो चुका है. यहाँ पे आके इसने गुड बाय बोल दिया जहाँ से इसने स्टार्ट किया था एंड अभी अपनी डेस्टिनी दिखाने कहीं ले जा रहा है.
I think you will marvel at what I have to show you. Still dwelling on your father? Not at all. I was only reflecting on my visions, wondering at them. How present they are, like memories of yesterday. Describe them for me, your visions. My earliest was of a large door embedded in ice, far north of Herdafylke. The saga stone embedded at the top of its arch. As the visions grew stronger, the door opened, revealing many things. The life tree Yggdrasil, the golden fields of Valhalla, and the faces of our gods, all of whom called me friend, brother, warrior. I felt at home among them, warmed by their love. You should know, you are not alone in this. I too have had visions. Have you? And what did they foretell? It is hard to say. I've seen Odin leading me into shadows. I've seen spinners weaving wild destinies from pools of blood. I saw the great beast Fenrir, the branches of the world tree, and a man with... Go on. Valka warned me of a great betrayal. But what form it takes, I cannot say. I see. I hold to my oath, Sigurd. You know that. Betrayal is not in my nature. Of course not. You are a stalwart as a pillar of stone. Come now. My destiny awaits. तो ईवॉर ने भी रिवील कर दिया सिगर्ड को कि उसे भी विजन्स आया करते थे, बट उस विजन्स का मीनिंग इसे पता नहीं है, जबकि सिगर्ड को जो विजन्स आता है उससे ही थिंक्स कि ही इज अ गॉड. तो अब पता नहीं, देखते यार कौन सही है कौन गलत है. बट रीच द नॉर्दर्न मोस्ट फ्यॉर्ड. ओके, क्या हो गया यहाँ पे? Let's get out of here. Sail! Catch the wind! The daughters of Aegir, bless our passage. Yes. I feel a great calm as we cross these waves. This ordeal with the Elf King, Alfred. How far have you pushed him? Does he bend? Will he break? Guthrum's army will be chasing him across Wessex now. With luck, he will push Alfred into the sea. Strange how these earthly concerns seem so distant to me. But we've gained so much in England, and we stand to win even more. The Christians are hardy foes. They see one man above who holds the axe. One man higher than us all. That is a powerful fuel. We hold our own axe. We swing it where we may. The woman, Fulke. In my time with her, as painful as it was, she showed me things. Things so strange and wonderful, I am almost grateful for her treachery. What she did to you was cruel beyond measure. Yet, with every snap of the flame... यार सिगर्ड को जब फुल्के ने कैप्चर किया था तो सिगर्ड कह रहा था कि अच्छा हुआ उसने कैप्चर किया था एंड टॉर्चर किया था सिगर्ड को. उसी की वजह से उसके जो विजन्स आए थे उससे इसे पता चल गया कि वो गॉड है. यार अभी भी हमें बिलीव नहीं हो रहा है यार कि यार क्या बोल रहा है, सही है या नहीं. बट कहीं पे तो अभी सिगर्ड हमें ले जाना चाहता है, वहीं जाके पता चलेगा कि सिगर्ड की बातें सच है या झूठ. ऐसा भी हो सकता है कि भाई फुल्के की वजह से सिगर्ड का दिमाग खराब हो गया हो, या तो फिर सही में उसको सच्चाई नजर आ गई हो. No, forget all that. The future is forward. A great wealth awaits us. I'm with you, brother. Until the end. ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड वेदर काफी ज्यादा खराब है. पता नहीं सिगर्ड कहाँ लेके आया हमें. Yes, this feels familiar. Eivor, we will press on. Let's go. The rest of you wait here. भाई कितनी ज्यादा ठंड हो गई यहाँ पे. एक काम करते पहले खुद को अपग्रेड कर लेते, कोई भरोसा नहीं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ओह, मेन्यू नॉट अवेलेबल आ गया था बीच में. सही है, देख रहे हो, मतलब अभी वर्ल्ड मैप हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, 16 स्किल पॉइंट्स है, इसे ले लेते हैं फटाफट से.
डन, लेट्स गो अहेड, फॉलो सिगर्ड। ये कहाँ लेके आया पता नहीं, बट सिगर्ड बार बार बोल रहा है कि ये जहां भी लेके आया सही जगह लेके आया, बिकॉज उसके विजन्स में यही सब दिखता था इसे। Sigurd, can we not wait for this to pass? Ah, the sting of ice on skin. Revel in this, Eivor. We walk the footpath of the gods. To where? More glaciers and deserts of snow? To glory! Could we not wait until this tempest... Could we not wait until this tempest quiets down? With a ship, where we have meat and food to warm us. No! We must confront the omens and honor the gods! They will not seek or find you! We must go to them! We would be poor company, with frozen bones and ice pellets for eyes. You need not fear the cold, Eivor. Where we are going, the winds and snows cannot touch. ओ भाई, सिगर्ड बोल रहा है कि ये ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ पे ये वेदर का कोई इम्पैक्ट हमें फील नहीं होगा। क्या हो गया है भाई सिगर्ड? ये फुल्के ने सच में इसका दिमाग तो नहीं खराब कर दिया था जब ये कैप्टिव बन के था उसके पास? It's as bitter cold as wind from Niflheim. Keep steady. It should not be far now. ओके, लेट्स सी, पहुंचने वाले हैं। बट अगर सही में ऐसी कोई जगह निकली ना, फिर तो सिगर्ड पे पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि इसके जो भी विजन्स आ रहे हैं वो सच है। It must be near. I know the shape of these rocks. Yes, we are close. For the sake of frozen fingers. I hope so. सिगर्ड बोल रहा है ये सब जगह उसको रिसेम्बलेंस जैसी लग रही है, इसको पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये सारे रॉक्स जाने पहचाने लग रहे हैं सिगर्ड को। There, that frozen lake. This must be it. And ahead lies a cavern. Will you not say where this leads? You will see soon enough. And too late to turn back, I fear. There, the cave. Within hides the sacred gate. भाई यहाँ पे एक केव है बता रहा है सिगर्ड। ओह नो वे गाइस, सही में यहाँ पे केव है। मतलब सिगर्ड को जो भी विजन्स आ रहे हैं वो सच है। The ice looks fragile. Can you clear it? मतलब फुल्की के पास जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स थे गाइस, उससे इसने कुछ तो सिगर्ड के साथ किया है जिससे सिगर्ड को कुछ विजन्स दिखता है एंड वो सच है। भाई अब खतरनाक स्टोरी बढ़ रही है आगे। This is it. Gods. This door. Whoa. Have you seen this before? In the space above. The Saga stone sat there, did it not? Long, long ago, yes. Now stand clear. Svachoi nokvat uns membro trurvondi kvorde solas vras gnokatide unsum hugas reisderae chasaunsi। भाई कुछ तो स्ट्रेंज लैंग्वेज में बोल रहा है सिगर्ड। हैंड डोर खुल गया। भाई मान गया यार सिगर्ड को, सिगर्ड के विजन्स ट्रू है मतलब। Of a life once lived. Come. Gods. What is this place? ईवोर को भी रियलाइज नहीं हो रहा है भाई ये हो क्या रहा है। तो क्या सिगर्ड सही में गॉड है क्या यार? ये गॉड का फॉर्म है, नहीं तो पता नहीं यार। गेम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। Over here. This blade will lead us onward. Hoerashi. Sigurd, I
I don't know what to say. This is all so strange. Trust this place, Eivor. This old and sacred place. Where does it lead? To the Hall of the Slain and the Golden Fields. To Valhalla. ओह, सिगर्ड बोल रहा है कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग वालहल्ला पहुँचने वाले हैं, जो कि बेसिकली हेवन ऑफ द वाइकिंग्स होता है. Was it crafted by dwarves? It is finely made, that much is true. I doubt Gunnar could hammer a piece any finer. In this cavern, so deep and humming with magic. There, the old tree, Bhai the tree of Sahab. life. What is this? See how proudly she sits, how beautiful she gleams. Here, all यहाँ the पे तो fruits कुछ of अलग ही life वर्ल्ड है run यार अंदर. Skalds would cry to behold such a sight. And there is more to come. I swear by all the names of the Old Father, this is only a taste of what I have in store for you. For my visions go further, to Odin's great hall. There. Do you feel that? The sacred energies. I have never seen something so grand. सीरियसली भाई, ये खतरनाक ग्रैंड आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है हर एक चीज. ये है क्या यार? सिगर्ड को ये सब विजन्स कैसे आए? एंड जो भी आए सब कुछ सच है. एंड सिगर्ड तो ये भी कह रहा है कि हमें वालहल्ला तक पहुंचा सकता है. भाई ये तो कुछ खतरनाक से इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है अब. Yes, it is returning to me now. This ancient shrine is set alight by the sphere of metal. And these shining arms, these branches, they will grant us access to the refuse of the gods, to Valhalla. Are you ready? What lies beyond all this? Where does this lead? Take your place at the center there, and you will see. ओ भाई साहब, तो सिगर्ड बोल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे सेंटर पे खड़े रहना है एंड देन हम लोग वालहल्ला में पहुंच जाएंगे, जो कि वाइकिंग्स का हेवन होता है यार. ये क्या हो रहा है इसके? ओ भाई साहब, क्या हुआ इसके साथ? हम लोगों को भी सेंटर में बुला रहा है सिगर्ड. सही है, तो कुछ तो खतरनाक होने वाला है यहाँ से. तो यहाँ से गाइस हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे. अगर अच्छा लग रहा है सीरीज तो लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए वंस अगेन बाय एंड टेक केयर.